EVOS presents स्वास्थ्य संवाद एवं कनक न्यूज द हेल्थ कॉन्क्लेव 2023 को पावर्ड बाय यूजेनिक्स हेयर साइंसेस एवं कमल वाच को सिंस 1969 प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर EVOS को पावर्ड बाय यूजेनिक्स हेयर साइंसेस kamalwatch.co since 1969 supported by Apollo Hospitals Touching Lives, Kalinga Super Speciality Hospital, AMRI Hospitals, a joint initiative by स्वास्थ्य संवाद एवं कनक न्यूज। Well, this session is going to be extremely special because it is not a session but the recognizing and the felicitation of somebody who has extremely been very instrumental in helping people in need just in the right time. But before introducing him with the AV, I'd like to read out a few lines about him. He is none other than Dr. Gaurav Ralhan, CEO of Health on Top, a very well-known and dedicated social worker who has started a medical equipment entrepreneurship during COVID pandemic since 2021, which was named Health on Top. During the pandemic, he started distributing various medical items at a cheaper rate than the market and evidently proved that humanity is beyond the materialistic world. May I now request the console to kindly play his AV. समाज सेवी तथा व्यवसायी गौरव राल्हान 2021 रु आरंभ करिसेंती मेडिकल उपकरण व्यवसाय हेल्थ ऑन टॉप, जहाँ खूब शीघ्र ओडिशा रे एक सुनामधन्य ब्रांड भावे परिचित होई परिछि। कोविड महामारी समय रे जितेबेले मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलिंडर भली अत्यावश्यक सामग्री रा अभाव परिलक्षित हैला, सेतेबेले समाज सेवा करिबाकू निज स्टोर रे थिबा उपकरण सबकू मार्केट थारु कम मूल्य रे बांटी चालिले। ह्यूमन हेल्थ को प्रायोरिटी देबाकू हेले एनवायरनमेंट हेल्थ को मध्य अग्राधिकार देबा उचित भावी मागणारे राज्यर अनेक जलाश्रयर पुनरुद्धार करने सह गृह आवर्जना को ऑर्गेनिक कंपोस्ट रूपरेख देले। एमिति कि आवर्जनारू इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने दिगरे एबे से कार्यरत। तासह ओडिशार प्राचीन लोककला गोटीपुओ नृत्य को विश्व दरबार रे पहुंचाइबाकू शपथ करिसेंती गौरव। एभली महान कार्य पाई टाइम्स ग्रुप द्वारा हेल्थ आइकन अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ उगांडा राष्ट्र मुख्य तथा अफ्रिकन देश मालावीर राष्ट्रपति मध्य गौरव को समाज सेवा को प्रशंसा करिसेंती, जहा कि तांकू आगु को बढ़िबाकू प्रेरणा जोगाइबो बोली कहंती गौरव। द रियल कोविड वॉरियर गौरव को स्वास्थ्य संवाद और कनक न्यूज रा शुभेच्छा और शुभकामना। Ladies and gentlemen, I'll request all of you to please welcome Shri Gaurav Ralhan, CEO Health on Top, on the stage with a huge round of applause as we thank him for his selfless efforts in providing relief during the pandemic. His dedication and compassion in helping those in need has been unmatchable, and his continuous efforts has shown how bright the humankind can shine when in need. I'll request all of you to please welcome him, and I'd also take this opportunity of requesting Dr. Randeep Guleria to please join us on the stage to felicitate Shri Gaurav Ralhan. I would also request Dr. Sita to please join us on the stage to felicitate Shri Gaurav Ralhan on the stage. Well, this was absolutely the camaraderie we admire on stage. Thank you so much. विश्वर प्रतिष्ठित प्रोबायोटिक कंपनी यूएस लैबोरेटरीज रो प्रतिष्ठाता, जेके यूनिवर्सिटी रो चांसेलर, डीडी इनोवेशन रो चेयरमैन तथा दूरदृष्टि संपन्न दार्शनिक और वैज्ञानिक डॉक्टर सीता दास सर्वदा राज्यर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अभिवृद्धि पाई प्रयास करि आसिछन्ति। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे तांको अतुलनीय अवदान पाई भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति श्रीयुक्त प्रणब मुखर्जी ठारू पाइछन्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विज्ञान, कला, संस्कृति तथा दर्शन क्षेत्र रे अवदान पाई ओडिशार मान्यवर राज्यपालक ठारू डिस्टिंग्विश्ड नॉन रेसिडेंट ओडिया अवार्ड तथा प्रवासी उत्कल सम्मान और हिंदू सोसाइटी ऑफ मिनेसोटा तरफ पाइछन्ति आउटस्टैंडिंग मैन ऑफ द ईयर अवार्ड।
भुवनेश्वर प्रतिष्ठित कलिंग हॉस्पिटल को अत्याधुनिक ज्ञान कौशल सहित 400 शଯ୍या विशिष्ट हॉस्पिटल रे परिणत करने सहित एक नूतन सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट प्रतिष्ठा करने दिगरे से बे कार्यरत अछंती। एही सम्मानास्पद व्यक्तित्व को स्वास्थ्य संवाद और कनक न्यूज रा हेल्थ कॉन्क्लेव को सुस्वागत और अभिनंदन। ताज ग्रुप ऑफ होटेल्स रु क्यारियर आरंभ करथिबा श्रीमती नीलांजना मुखर्जी 17 वर्ष पूर्वे हॉस्पिटल इंडस्ट्री रे पाद रखिथिले जणे रेडियोथेरापी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर भाबे, किंतु प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सैटिस्फैक्शन को कर्ममय जीवनर सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंग भाबे विवेचना करुथिबा श्रीमती नीलांजना अपोलो हॉस्पिटल और कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल भली अनेक मेडिकल रे कार्य दक्षतार परिचय देई एबे भुवनेश्वर स्थित आमरी हॉस्पिटल रो वाइस प्रेसिडेंट भाबे कार्यरत अछंती। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रो कोर कमिटी मेंबर, आईसीसी और सीआईआई रो हेल्थ कोर कमिटी मेंबर और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया रो स्टेट सेक्रेटरी भाबे कार्य करुथिबा श्रीमती नीलांजना हॉस्पिटल इंडस्ट्री रो जणे उदीयमान लीडर, जहांको कर्ममय जीवनर मूल मंत्र हेउछि लीड द टीम विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। श्रीमती नीलांजना मुखर्जी को स्वास्थ्य संवाद और कनक न्यूज रो शुभेच्छा और अभिनंदन। I would like to welcome Ms. Nilanjana Mukherjee on the stage right now. I'd also request a moderator for the session, Mr. Nilanjana Mishra, editor Kanak News, to also join us on the stage. आम पाखक बहुत लोक फोन करती जे गोटे रोगी अच्छी पाखे पैसा ना आम ताकू गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं जाइछु कौन हेल्प करा जाई पारिबो। गोटे कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग होउची जहाँ पाखरे टंका नाही बा इंश्योरेंस नाही से प्राइवेट हॉस्पिटल को जीवा उचित नुहे। किंतु नंबर 2 होउची जे पृथ्वी रे जेते लोक जन्म होइचंती समस्तंकर समान टाइप रो स्वास्थ्य सेवा पाइबार अधिकार अछि। आपण शिक्षा आउ स्वास्थ्य को किछि लोकंकर प्रेरोगेटिव करि परिबे नै, किछि लोकंकर आवश्यकता बोली कहि परिबे नै। सेति पय आमे कहूछु यूनिवर्सल एजुकेशन, सेति पय कहूछु आमे यूनिवर्सल हेल्थ। आपणक मोर शरीर आउ मुकेश अंबानी शरीर भितर किसी असुविधा ना, से माने गोटे समस्त समान प्रकार स्वास्थ्य सेवा जोगे देवा दरकार। किंतु गत किछि वर्ष भितर सरकारी हॉस्पिटल को बहु गुण रे टपी जाइछंती बेसरकारी हॉस्पिटल, जो माने इनोवेशन टेक्नोलोजी रे एक्सपेरिमेंट करूछंती, क्वालिटी केयर बढ़ुची। किंतु मते बेले बेले लागे ये होची गोटे गोष्ठीर हॉस्पिटल, गोटे वर्गर हॉस्पिटल, ये साधारण मनुष्यर हॉस्पिटल नहे। Lots of things you must be knowing, little bit add to the things. One, Kalinga Hospital, again restating, was the first corporate hospital, super specialty corporate hospital. There was no such thing. We paved the way for others to follow our footpath, and they have done so, and we are proud that we have many good hospitals are here in Bhubaneswar. Why I am trying to tell, I am since March, Kalinga Hospital is under new management. That is means I am the owner and the chairman of Kalinga Hospital. Why I am saying all this? I do not represent Odias in Odisha. I do represent Odias outside Odisha. I care them, their families are here. When they are in trouble, they look for who is going to help them, guide them. 2 days back, one of our directors, Hajari Mudali, he died. They are established in America. They are established also here. Their parents are. They came to the rescue, and they who are. Kalinga Hospital is not, as I say, only for Odias here in Odisha, Odias outside Odisha. I care them. When last time they asked me, Dr. Das, what is your family? I said, my family consists of 52,000 Indians. I represent them. I care them. I care them. मैडम नीलांजना मु जाना चाहिए
जे प्रकृति में आपण प्रिविलेज क्लास नुहति आपण कॉमन मैन्स हॉस्पिटल मने करंतु गोटे छोटिया लोक गोटे ट्रॉली ड्राइवर रो एक्सीडेंट हला आपण को पाखक गला से आमरी हॉस्पिटल ले ट्रीटमेंट नहीं पारिबो कि ता पाखरे इंश्योरेंस नाही. First, I would thank Sambad for giving me this opportunity to speak in this forum. Common man, as far as health is concerned, doctors or nurses, they don't see whether the patient can pay or not. जेते बड़े से आसुचंती emergency रे से पचरु नाहंती कि आमर पाखरे टंका अछि ताले मु सेव करिबी. None of the doctors who are sitting in this room will ever not try to save a patient because he is poor. Coming to private hospital, yes, what the doctors have been saying initially in this evening is there is a myth that you have a beautiful building, that means you will be extracting money. There are so many patients who come to the emergency, we save life. If they can afford the private hospital, otherwise they are shifted to the government hospital or nearest center with the cost of the private hospital. I have my fellow colleagues also sitting here, and there are so many cases we can say. Gote case asila didin agru, where one sand mine mafia was hit by a bhujali. That bhujali had hit his between the neck and the skull. And the patient came at 7 o'clock in the morning. Say he was driving a scooter and somebody came and hit with the bhujali behind. He went to a hospital. From there he was transferred to AMRI hospital. And from 7:30, his OT started dot at 8 o'clock because all the neurosurgeon, all the emergency doctor, samaste OT re asiki tankar save kalla. We saved him. He got discharged. Luckily, by Lord Jagannath's grace, the bhujali did not hit his skull. So eventually he was saved. So it is a myth. There is a provision that private hospitals are also compassionate and they also treat people not only just demanding money. इंडियन मेडिकल हिस्ट्री रे खूब कम उदाहरण रही बोधे डॉक्टर गुलेरिया कही पारे रेयरेस्ट एग्जांपल रही जो डॉक्टर्स नेग्लिजेंस को आम पनिश कर तो डॉक्टर माने कौन केबे भूल करती. I think there are a lot of examples for doctors negligence jete bade doctor mane reprimand hejanti and lot of hospitals has to pay through their nose because of medical negligence. Coming because sir you have brought in the medical negligence point, I would like to state here that is a tussle between the white coat and the black coat, and we very recently had a medico legal conclave. Doctor negligence ro gotte point hela documentation of doctor and counseling of doctor. How much time you are trying to explain the patient कि कौन रोगो हेची, कौन पाई आपनो investigation करूचंती, why this investigation is needed and what is the mode of treatment. Very, very few doctors are actually getting into documenting it, which is actually bringing the question in the patient's mind that the doctor is just fleecing money out of it. So clear-cut transparency of what exactly can you treat the patient or you cannot treat the patient should be very clear with not only the doctor but also the hospital administration. डॉक्टर दास आपण कलिंग हॉस्पिटल को गोटे सीएसआर प्रोजेक्ट भाव भावती ना गोटे कमर्शियल यूनिट भाव टेक अप करिसंती. That question, that is debatable for me. If people know me, I am a philanthropist. And as I said, that's the reason he's asking me, am I looking at a commercial hospital or this way? I am finding a way in between. Why did I say? I am the chairman and the chancellor of JK University. JK University is a charitable organization. I also head up that one, and with the help of Swami Mukundananda, and we have been working together for more than 2 years. So that is the charitable part. And the other part, Kalinga Hospital, has been a commercial hospital for long time. There used to be at least 40 shareholders. They did own, but now they are being bought out. So they
That's a part of the story. The other part of the story is, I think he didn't mention, we have to fix it to regain the reputation and the quality of healthcare. Quality of healthcare is the key. I am coming from a state called Minnesota and the place of Mayo Clinic. With that vision, I will be taking Kalinga Hospital to that level. That is my goal. But that is also the doctors and things I have exchanged. It is at my own cost, Dr. Das Foundation. So that money I have been spending and working in such a way, we are not dumping everything on our citizens. I promised Kalinga Hospital will be for the Odias, by the Odias, of the Odias, that means the residents, those who built it. You make your fortune out of somebody's misfortune. जड़े रोगाक्रांत हेले जड़े एक्सीडेंट रे पड़ले आपण हॉस्पिटल भाग्य बदले सबू मनीष जदि सुस्थ हो जाते दुनिया रे रोग जो दिन बंद हो से दिन हॉस्पिटल सब बंद हो सो आपण तो केबे चाहू नथिबे लोक माने अधिक संख्यार रोगाक्रांत हूँ तो आम हॉस्पिटल चालू कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस आम हॉस्पिटल गुड़िक आम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट गुड़िक सिंसियरली चाहती कि रोगर प्रिवेंशन करा जाऊ रोगी संख्या न बढ़ू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमती किसी रिसर्च चलती मोर मन हुए ना वे तो डॉक्टर गुलेरिया विल एनलाइटन अस जे प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस उपर आम हेल्थ केयर सिस्टम रे कौन फोकस रही बट स्मॉल लेवल रे इंडिविजुअल लेवल रे आम सेमती किसी एफोर्ट करू कि टू प्रिवेंट डिजीजेस First thing is, I don't agree with you that, of course, it is it is something we thrive on, but there are good sides of it because healthcare industry is one industry where each and every worker is blessed because we stand by every patient when they are in the hour of need, whether it is the sister or the housekeeping or the doctor. First question is that. Second, prevention, I want to tell you, sir, is there are so many industries in the state of Odisha and very big industrialists in the state of Odisha. How many people have actually made preventive health checkup mandatory in their industries? How many industries are employing people that every year they should go for preventive health checkup? And jetebade they are detected with certain diseases. How many industries are actually financing their people to be treated? That is the question today. Today, preventive health checkup is just not limited to hospitals, but awareness to all industries, small scale, big scale industries, that workplace hazard, jemti apune jodi DG plant re kamo koruchanti, then you have an ear problem. How many times does a DG plant worker come from a preventive health checkup? How many laborers come from a preventive health checkup from these factories? That is the question that preventive health checkup, what Dr. Guleria said, has to be within each and every entrepreneur to ensure that our state is healthy. बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास मैडम नीलंजना. Thank you, sir. संबाद परिवार तरफरु सबुबले नुआ किछि करिवार उद्यम आमे करिथाउ. स्वास्थ्य संबाद भली गोटे नुआ झरका खोलिबार जो उद्यम से उद्यम को आपण माने तांकर उपस्थिति माध्यम रे आपण मानकर उपस्थिति माध्यम रे अधिक प्रासंगिक करिसंती, गौरवान्वित करिसंती. मु जेतेबेले ए प्रेक्षालय को पशिली कार्यक्रम रे दुई जन का ना देखिली, प्रोफेसर डॉक्टर गुलेरिया एवं श्रीजुक्त बागची. 3 वर्ष तलर दृश्य सब मन पड़गला. संध्या हेले दूरदर्शन रे गुलेरिया साहब बाहरती, आमर ओडिशा टीवी रे बागची साहब आसंती एवं आमे समस्ते चातक परी अनै थाउ
जे आज केते कोविड रो पारा बढ़िला और केते कमिला, केते लोक मृत्युवरण कले बा केते लोक केते जण सेव हेले और यार आगो को आमको कौन करने को अच्छी वर्तमान विश्वास हो नहीं जे से दी जण बसी पुणी यही मंचरे एभली एक आलोचन भाग नेले जहाँ को आपण माने निश्चय उपभोग करिथिबे। ठीक सेहीपरि भाव में आमे माने जो डॉक्टर बंधु मान को एठी एकाठी पाइछु, आजिर ए उत्सव को मु एथिपाई व्यक्तिगत भाव स्वागत करिथि एवं व्यक्तिगत भाव अनुभव एवं उपभोग करुछि जे ईश्वर करंतु जगन्नाथ करंतु एमाने एभली गोटे छात तले देखा साक्षात हुंतु पछे ताको क्लिनिक रे देखा साक्षात हुंतु नाही। कहिबार तात्पर्य हला डॉक्टर गुरेरिया को मु एम्स रे केबे देखिबाकू चाहिबी नाही, कारण रोगी हेले ही जाई सेठी जीवाकू पड़िबो कि अन्य डाक्तर मानू तांको निज निज हॉस्पिटल रे भेटिबार सुजोग मते न मिलू, एईटा ही मु ईश्वर को पाखरे प्रार्थना करिबी। तार विनिमय रे जदि सेमानकु आमे वर्षरे थरे गोटे छात तले रखी एभली भाव रे देखंतु एई छात तले कलिंग हॉस्पिटल अच्छी, आमरी हॉस्पिटल अच्छी, एपोलो हॉस्पिटल अच्छी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अच्छी एवं आहुरी एससीबी मेडिकल कॉलेज रो वरिष्ठ प्रोफेसर मध्य विद्युत दास तांकर वक्तव्य दे गलेनी। गोटे छात तले एभली समस्त को पाइबा आदौ सहज नुहे, तेणु स्वास्थ्य संवाद रो उद्भावन उन्मोचन एवं कनक टीवी एवं संवाद परिवार रो एपरी उद्यम फल आपण माने एकाठी होइचंती, सेथिपाई मु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश रु धन्यवाद जणाइबा पई चाहूँगी। आमे भारत रे एवं अमेरिकार सबु डाक्तर बंधु मानक भितरु अधिकांश भारत रु पई शिक्षा लाभ करी सेठी जाइचंती, तेणु जो माने अमेरिका रु आसी एठी बसति करिचंती एठी सेवा प्रदान करुचंती सेही मानकु मु विशेष भाव में अभिनंदन जणाइबा पई चाहूँगी। सेथिपाई सीतिकांत बाबू मध्य आमर अन्यतम अतिथि। मु केवल गोटे कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी। आम आसेम्बली रे गोटे डिबेट होउथला जे निशा निवारण करने पछरे जुक्ति कौन थाई पारे। गोटे लोक निशा निवारण पाई दाबी कला बेले मु तार गोटे उदाहरण मात्र देली। आपण जदि हेलमेट न पिंधि गाड़ी स्कूटर चलेबे एवं मद निशा पी ड्राइव करेंगे आपण रास्तार पड़ीजे, तापरे आपणकर स्कलटा भुजाली न माड़े कौन है से पत्थर माड़ खाई फाटीज, ताहले आपण को गोटे आम्बुलेंस आनी हॉस्पिटल को नहीं जीव। आपण जड़े नेतार संपर्क होता दृष्टि आपण को आगे सीट नथिले भी गोटे खटियारू गोटे अन्य रोगी को होसारे आनी आपण को सेठी दब एवं आपण को चिकित्सा न कले जेहेतु आम खबर कागजर लोक काले खबर लिखबू खराब भाली आमको आगे अत्यधिक अटेंशन दे आमर सुरक्षा देबे, किंतु तार जदि कॉस्ट बेनिफिट आपण एनालिसिस करिवे ए खटियाटी खाली कराइबार मूल्य केते, आपण को पाई जो डाक्तरटी लागिला जेते समय देला ऑपरेशन पाई जेते समय खर्च हला जेते ब्लड लागिला एवं जेते समय गला तार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जदि आपण विचार करिवे ताहले आमे आउ गोटे कहीं 10टी रोगीर चिकित्सा करि पारंते। सेइथिपाई निज पाई जेतिकी नुहे स्वास्थ्य व्यवस्था को आहुरी अधिक समृद्ध करिबा पाई यार एकांत आवश्यकता अछि। तेणु आमे स्वास्थ्य प्रति एइभली दृष्टिकोण जदि आपणेइबा ताले अनेक गुड़िए समस्यार समाधान हो पारिबो। मु आपनकु गोटे लंबा भाषण दे भाराक्रांत करने को चाहूना। स्वास्थ्य संवाद गोटे अभिनव कल्पना को साकार करने आपण मानकर सहयोग और आशीर्वाद मो कामना करुच्ची। आपण माने किछि किछि परिमाण रे आशीर्वाद करिसंती। एभोस कंपनी यूजेनिक्स विभिन्न हॉस्पिटल रो बंधु माने एवं अन्य माने यदि तांकर सहयोगर हाथ बढ़ाई न थांते ताले आमे जो माने मीडिया अनुष्ठान अच्छु यदि कॉर्पोरेट वर्ल्ड डजंट एक्सटेंड इट्स हेल्पिंग हैंड to the media house, we would not be able to give you this show. Therefore, I appeal to you. We are already in very bad times. Please continue
extending your helping hand. We will be there for everybody who needs help in health sector. Thank you again. Now, ladies and gentlemen, this is EVOS presents the Health Conclave 2023, a joint initiative by Swasthya Sambad and Kanak News, co-powered by Eugenics Hair Sciences, Kamal Watch Company, supported by Apollo Hospitals, Kalinga Super Speciality Hospital, AMRI Hospitals Bhubaneswar, Paradev Phosphates Limited. And once again, we'd like to extend our gratitude and appreciation to all of you for having joined us for the Health Conclave 2023 and making it a grand success. Thank you so much. EVOS presents Swasthya Sambad এবং Kanak News, The Health Conclave 2023, co-powered by Eugenics Hair Sciences এবং Kamal Watch Co since 1969. Presenting sponsor EVOS, co-powered by Eugenics Hair Sciences, kamalwatch.co since 1969. Supported by Apollo Hospitals, Touching Lives, Kalinga Super Speciality Hospital, AMRI Hospitals. A joint initiative by Swasthya Sambad এবং Kanak News.